मुझे बहुत सही लगा कि ये टॉपिक पे मैंने बाकी लोगों को बोलने दिया, क्योंकि ये टॉपिक मेरे लिए इतना ही पैशनेट है जैसे बीचेस था। सो सी आई फील, जो निकिता ने बोला था पॉइंट, कि देयर आर फ्यू पीपल हु आर कंज्यूमर्स एंड देयर आर फ्यू पीपल हु आर कंज्यूमिंग, लाइक हु आर मेकिंग इट। सो एक बहुत सही चीज जो मैंने देखी पोस्ट पैंडेमिक या पैंडेमिक के टाइम से ट्रैवल करते समय, कि पीपल हैव मेड व्लॉग्स, पीपल हैव मेड देयर लेफ्ट देयर डिजिटल फुटप्रिंट। सो उससे क्या होता है ना कि यू बिफोर, लाइक फॉर मी पर्सनली, अ विजुअल मीडियम इज मच मोर एंगेजिंग देन अ ब्लॉग और अ रीडिंग मटेरियल, या आई डोंट नो, जस्ट एक्सप्लोरिंग वाला शिट। आई एम नॉट दैट गाय। लाइक मुझे वो सब नहीं पसंद। आई कैन नॉट गो without a plan. I need places to visit. I need them in the order that I need to visit them in terms of priority, कि हाँ यार ये जगह करना ही है, फिर ये जगह करना है, और ये जगह छूट भी गई तो भी चलता है। So then you need to have a plan, you need to have a backup plan, so that you know if anything goes wrong, you are in like you are in safe hands. So मेरे लिए वो जो एक कंज्यूमर वाला पार्ट है, उसके लिए तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, बिकॉज यूट्यूब पे इतने ज्यादा वीडियोस है रैंडम रैंडम जगहों के यार, लाइक राइट फ्रॉम, जैसे मैं जर्मनी जब गया था, तो एज अ फर्स्ट टाइम ट्रैवलर टू जर्मनी, वहां पे क्या क्या होना चाहिए इंडियंस के लिए, दैट वाज ऑल क्लियरली डॉक्यूमेंटेड, कि हाँ यहाँ वेजिटेरियन फूड का ये है, यहाँ पे ये देखने लायक है, यहाँ पे ये एक्टिविटीज मस्ट डू है। सो दैट वाज जर्मनी से शुरू हुआ। देन देर इज लाइक स्मॉलर प्लेसेस वेयर, लाइक हाँ गोवा में ये करना चाहिए। गोवा में तो मेरे को लगता है आधा ट्रैफिक तो यूट्यूब का गोवा वीडियो से ही है इंडिया का। फिर उसके नीचे अगर अपन आते हैं, तो लाइक इवन लाइक प्लेसेस अराउंड नागपुर, सो जैसे हम अभी अभी गए थे रामटेक, खिंडसी वगैरह, तो वहां पे भी देर आर लाइक स्मॉलर प्लेसेस, लाइक कर्पूर बावड़ी करके एक जगह है, तो उसका सिग्निफिकेंस और उस पे भी करने की चीजें। So people from Nagpur have made those vlogs, and they are like very, you know, normal लोग जो एक्टिवा से जा रहे हैं वहां पे, टू व्हीलर से जा रहे हैं। So they have made all that effort, they have documented it very well, and they have put everything on net for you to explore, for you to like it's an easy thing for you to do. So जो कंज्यूमर वाला पार्ट है, उसके लिए तो बाय अ मार्जिन आई एम थैंकफुल कि लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, अपना डिजिटल प्रेजेंस छोड़ रहे हैं। चैल का जैसे पॉइंट था कि फोटोज चाहिए, फोटोज, हाँ फोटोज इज अ मच मोर पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ इट, बट आई फील वीडियोस भी चाहिए। लाइक आई एम गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन कंप्लीटली, सेइंग दैट वीडियोस भी चाहिए विद places to see, things to do, food to eat, safety wise, every time to visit, months के लिए, डे के लिए, कब सनसेट दिखता है, you know, you get that information with you pre hand ready made, किसी ने करके रखा है तुम्हारे लिए। सो कंज्यूमर वाले पार्ट के लिए तो hats off for whoever is doing. Now, coming to the more personal part, which is posting on social media and having a digital presence and all that. So, guys, personal branding time again. एक आइडिया है यार, इधर अंबाझरी करके नागपुर में जगह है, जहाँ पे बहुत ऐसा वो लेक टाइप का है, सुंदर इकोलॉजिकल पार्क है। हम वहां पे गए थे ऐसे ही लॉकडाउन के टाइम पे, वो खाली रहता था। तो आइडिया है कि वहां पे डांस करना चाहिए आउट ऑफ द ब्लू। ऐसा कुछ उसमें ये नहीं था, किसी ने गाने लगाए थे, दैट्स इट। एंड देन वो एक दिमाग में आ गया और वो डाल भी दिया। एज अ 30 ईयर ओल्ड, तब शायद 28 ईयर ओल्ड जो भी था, रील्स इज नॉट आर थिंग, एज तेजस सेड, वी आर ऑफ द फेसबुक जनरेशन। हमारे लिए वो चेक इन और वो सब जरूरी था, विथ आकाश शिवकर एंड 5 अदर्स वाला। एंड देन वो एक नया पॉइंट था कि हाँ यार रील भी कर सकते हैं अपन, तो वो डाल दिया। डांस पसंद था, पानी पसंद था, तो दो चीजों को कंबाइन करके डाल दिया, एंड देन इट बिकेम अ थिंग। एंड पोस्ट दैट आई, like whenever I go to a water body or near a water body, I have this instinctive thought कि यार एक गाना कोई ट्रेंडिंग चल रहा है, उस पर डांस करना है क्या। एंड बिलीव इट और नॉट, वो कोरियोग्राफ नहीं रहता वहां पे, जो मन में स्टेप्स है वही रहता है। सो इट इज नॉट कोरियोग्राफ, हाँ टेक्स लगते हैं एक दो, बट नॉट, वो भी एक लिमिट रखा है कि हाँ इतना टाइम ही देना है। बट वो एक पार्ट हो गया मेरे ट्रैवल जर्नी का कि हाँ ये पानी के पास करना है। सो दैट इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हेनेवर आई ट्रैवल। So that has become a means of happiness only. Coming back to the topic का point, कि that has been added to the first वाला था checklist वाला, ये करना है, but now this is added to the checklist कि नहीं यार ये भी करना है। So I try to take the maximum out of my travel in the way कि ये जगह पे मैं maximum कैसे कर सकूं। And with that, photos, with videos, with dance, with reels, everything, I think the ultimate aim is divided into two parts. One is obviously the happiness of it, like how to how to be happy, how to take the most out of things. And second is, I think, थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव कि लाइक जो नॉस्टैल्जिया वाला पार्ट शैल ने टच किया कि बुढ़ा होने के बाद अपना ये डालूंगा मैं गैलरी। सो आई थिंक वेडिंग फोटोज या कोई भी फोटोज या कोई भी वीडियोस का एक ही पॉइंट होता है कि
at the end of nostalgia का वो होता है ना, I think it's a mixture of two words like pain of past. तो वही है कि we are happy in our past, we are happy in those moments, we are looking at them. So that's the second perspective whenever I look at the reels. तो वो आई सी कि हाँ ये मैंने किया है, मैंने उस जगह पे किया है, एक बहुत ही कोर मेमोरी वहां पे बन गई है कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी पर्सनल एंड यूनिक विद दैट प्लेस. एंड अभी एक थोड़ा मैं जानता हूँ ये फन है, बट एक लास्ट ज्ञान देना चाहूंगा मैं कि देयर इज फ्रॉम एन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव, लाइक जब अपना इंडियन ट्रेडिशन रहा है तो इट वाज ऑलवेज ओरल ट्रेडिशन. लोग बात करते थे मंत्र एक दूसरे से दूसरे को जाने के लिए, एंड दैट लेड टू नॉट बीइंग अ रिकॉर्ड for our history, right? So say for example 2500 में, आज से कितना 500 साल बाद जब भी लोग अपने जनरेशन को देखेंगे तो there will be enough information in this कि हाँ यार ये लोग जाके हाफ चड्डी में बीच पे नाचते थे. तो that is also the larger perspective कि हाँ ये digital footprint है. To keep a record of it is very very important as per me, because not only for us but as a generation we are leaving that footprint कि हाँ आगे जाके अपने जनरेशन को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है with these kinds of I would say digital videos or photos or whatever, like whatever we do has been published and it is well published, it is here to stay. So that is a bigger goal apart from the happiness and the nostalgia part. So yeah, that's my very hard take on जाओ रिकॉर्ड करो और कम से कम एक फोटो खींचो for your memory. That's it. Yes, sir. टीम फोटोज काफी 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 डाइवर्स ओपिनियंस. सो मतलब सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं चाहिए, सोशल मीडिया कितना इंस्ट्रूमेंटल है तक काफी बातें हो गई. As far as content goes, we kind of talked about the demand and the supply side together. #economics. But अभी तूने इतना ये जो बोला कि now making a reel is like your sort of happy point, like you look forward to that thing. तो अभी अगर रील्स बनाने हैं तो you need someone to record you, right? तो कौन रिकॉर्ड करता है यूजुअली और आइडियली? Is it a brother, is it a friend, or is it somebody else? मतलब वहां पर आपके प्रायोरिटीज कहाँ लाए करते हैं? सोशल मीडिया का तो पता चल गया. So kudos for a very good transition and segue. जो भी रिकॉर्ड करने को तैयार है मुझे, वो मेरा ट्रैवल कंपेनियन बन सकता है खुशी खुशी. विद दिस आई वुड एंड माय आंसर. मी अपने 2 शब्द संबोधो. फेयर इनफ. संक्षिप्त में. ओके ठीक है, let's not get any more personal, I guess. Let's leave it for episode 5 or 6 or something like that. वल्लभ को वीडियो से But yeah, I mean, it's an important point, right? कि मतलब it's an important point that तुम travel कर रहे हो तो किसके साथ कर रहे हो? I mean, traveling with family is a whole another experience compared to traveling with friends versus traveling with solo. जैसे शैल ने बोला कि बर्फ का रास्ता और आजू बाजू कोई नहीं है. So I mean, up until now जो भी discussion हुआ अपना ये पूरे calls में, पूरे context में, everybody has their own preferences, everybody has their own opinions. वो चीज तो है ही definitely. But let me sort of ask you this here कि sorry अगर कोई एक बस मेरा पॉइंट था बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. जो वल्लभ ने एक पॉइंट बोला कि हम रिकॉर्ड छोड़ रहे हैं, तो एक कुछ आर्टिकल है, मुझे डेटा नहीं पता एग्जैक्टली, जो अमाउंट ऑफ डेटा ह्यूमंस ने पिछले 20 साल में किया है क्रिएट, वो अभी तक हिस्ट्री में जितना हुआ है उससे ज्यादा है. तो बेसिकली देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज टू मच डेटा. तो एंड अगर देखेंगे तो अगर इफ लेट्स से 500 साल बाद लोग देखेंगे कि रॉकेट बनाने वाला ट्विटर खरीद रहा था और ये लोग हाफ चड्डी पहन के बीच पे डांस कर रहे थे, तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ लेगेसी वी आर लिविंग. बट डेटा एंड इन जनरल हिस्ट्री का प्रॉब्लम हुआ है कि अलोंग विद द डॉक्यूमेंटेड पार्ट यू आल्सो शुड नो द हिस्ट्री ऑफ द डॉक्यूमेंटर. तो मतलब यू शुड ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो अभी जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एंड जो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, आई फील दे आर नॉट necessarily the same people. So it should, I think social media is a very much of a user generated content part, which is good, which helps in virality, but it's not necessarily the kind of जो वल्लभ बोल रहे हैं कि long term purpose. I feel it will be better if we have more profiles on, let's say, people who are really getting Nobel prizes, doing something for the world, etc. That I think is lacking.
इस पे एक और आर्टिकल है, फ्रेंड्स लाइक व्हाई फ्रेंड्स डिफाइंड आवर जनरेशन की एवरीवन हेटेड रॉस एंड रॉस वाज लाइक द academician हाँ. and that defined our culture ki we like Joey Chandler because they're funny or something, but हाँ segue, but हाँ कभी उस पे बात करते हैं. तो pop culture defines how our generation perceives role models. That's true. तो आई थिंक इट डिपेंड्स कि वल्लभ जितने रील्स बनाएगा अभी उसके हिसाब से वो मैटर करेगा. उसने अगर 1000 रील्स बनाया तो शायद उसका कुछ इम्पैक्ट हो, but if he only makes like 20 or 30 then probably not, so maybe there is a hint in there somewhere. हाँ. So now coming back to इसमें the अगर person और who भी deeper records look those करोगे, reels, ultimately अगर किसी के भी साथ ट्रैवल करना है तो like what kind of a travel, like what kind of a travel companion has been, I would say, the most has given you the most enriching experience, I would say, कि जिससे either तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया या फिर बहुत ज्यादा सीखने मिला. Could be anything, but just your own perspective as far as the people around you goes. मैं शुरू करता हूँ. बेसिकली जैसा मैंने कहा कि मेरे फैमिली ने मेरे को वैसा ही ट्रेन किया है बचपन से. इट्स अ वेरी हार्ड वायर्ड थिंग वेर इन द चेकलिस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. यू आर अ टूरिस्ट except your hometown or a place where you have lived for a very long time. For me, it is Nagpur or say maybe Bangalore. Like for me, long time is minimum 3 years. Minimum 3 years. So if you have not stayed for 3 years at a place, you are a tourist there, as per me. So you have to explore as much as you can, and for that, it is very important that you have a plan. You have a I mean, you have a checklist, you have places to visit. Bangalore मुझे बहुत पसंद इसीलिए था क्योंकि there are so many places around Bangalore to visit. Like mountains से लेके तो farming, चिकमंगलुर और यहाँ पे beaches, गोकर्णा वगैरह, everything is there. So I love every travel around Bangalore. So what kind of travel companion I would like is somebody who matches that worldview. I am very uncomfortable with, like say for example, से शेम्बेकर ने बोला था कि like एक ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां जाके सब चीजें देखना है या फिर उस जगह का मोमेंट एंजॉय करना है. लाइक आई एम नॉट दैट गाय. मेरे हुए हैं इस पे क्लैशेस हुए हैं ट्रैवल में, दैट आई एम नॉट दैट गाय. मैं अगर गोकर्ण आया हूं तो मुझे मुरुडेश्वर टेम्पल भी जाने का है, मुझे ओम बीच भी जाने का है और मुझे गोकर्ण बीच भी जाने का है. अगर वो नहीं हो रहा है तो मेरा उस ट्रिप का पर्पस ये नहीं हो रहा, आई मीन फुलफिल नहीं हो रहा. सो आई डोंट नो व्हेन आई विल गो टू गोकर्ण अगेन, राइट. सो मेरे लिए ऐसा ट्रैवल कंपेनियन चाहिए. मेरी फैमिली तो वैसी है, मुझे आई नो दैट. सो आई लव ट्रैवलिंग विद माय फैमिली. दे आर वन स्टेप अहेड ऑफ मी. तो आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ योर फैमिलीज आर लाइक दैट कि अगर 10 बजे का फ्लाइट है तो रात का तो सुबह 9 बजे से तैयार रहते हैं. देयर आर इनफ मीम्स ऑन दैट. बट हाँ, मेरी फैमिली वैसे है. मैं टू एन एक्सटेंट अपने जनरेशन से थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ उस बारे में कि नहीं, मुझे देखना है वो चीजें. एंड अगर मुझे मेरे दोस्तों के साथ भी जाने का है या किसी के साथ भी जाने का है तो आई वुड प्रेफर समबडी हु has at least say, like see, if you're traveling with different people, everybody has a different goal, everybody has their own needs, everybody has their own agenda, so you have to adjust, right? So I feel that I need to go with people or I need to travel with people who at least agree to my must have wala list. So because that is a must have, right? So if must have is not happening, then the trip is cancelled basically. So I can give the example जैसे अंडमान वाला दिया था कि यही लोग थे उसमें मेजोरिटी. So I told them कि मुझे ये दो चीजें देखनी है, यानी देखनी है. लारा और शिंबेकर वो राधानगर बीच पे ऐसे पैदल घूम रहे थे कि हमको इसका वाइब लेना है. मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था. मेरे लिए था कि राधानगर बीच कवर करना जरूरी था, वहां नारियल पीना, नारियल पानी पीना जरूरी था. सो दोज वर माय थिंग्स. सो फॉर मी एन आइडियल ट्रैवल कंपेनियन इज वेरी सिंपल, समबडी हु अग्रीज ऑन माय मस्ट हैव्स. रेस्ट एवरीथिंग इज, आई मीन तुम नहीं खींचो यार मेरा रील, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. वो ऐसे बहुत वाटर बॉडीज मैंने विजिट किए हैं जहाँ रील नहीं खींचा गया है. बट या फॉर मी मस्ट हैव वाले कंपेनियन जरूरी है. हाँ मतलब जैसे कमिंग बैक टू द पॉइंट, लाइक हाँ मतलब आई डू अंडरस्टैंड, लाइक आई एम नॉट सेइंग that there is something I'm against having must haves, but जैसे गोइंग बैक टू द कंडीशनिंग थिंग जहाँ से वल्लभ ने चालू किया, फैमिली का वही था. लाइक आई थिंक सो मोस्ट ऑफ आवर फैमिलीज हैव बीन कि आप जगह जा रहे हो तो आप ये 5-7 जगह, लाइक स्पेशली थोड़ा टेम्पल ओरिएंटेड तो रहता ही था मोस्ट फैमिलीज का, या काइंड ऑफ लाइक अ गुड चंक ऑफ द फैमिलीज डू हैव दैट इंक्लिनेशन कि इफ यू आर गोइंग टू सिटीज विद रिलीजियस बेंट तो आप काफी सारे रिलीजियस प्लेसेस विजिट करोगे और ये सब करोगे, लाइक और उसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेस करोगे. सो दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ ट्रैवलिंग.
and मतलब, with getting a world view also, but going and visiting these must have tourist list places, जो और उस टाइम पे गूगल भी नहीं था, ये सब जगह जाना है, हमने पॉपुलर कल्चर में सुना है, न्यूज पे सुना है, ये सुना है, तो 5-10 जगह तो फिक्स है शहर में जाके करना ही करना है. एंड आई ट्रैवल्ड अ लॉट, क्रेजी डील विद माय फैमिली, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने उन सबके साथ इतना ट्रैवल किया. बट मतलब एज आई ग्रोन, मतलब स्पेशली कॉलेज फ्रेंड्स, लाइक स्कूल में इतना नहीं हुआ ट्रैवल, बट तुम लोग के साथ जितना मैंने ट्रैवल किया, कि दैट थिंग आई रियलाइज कि आई डू एंजॉय, मतलब आई एम accommodative in that sense कि मैं किसी भी, like if people want to go hard on travel, जैसे वल्लभ बोल रहा है लिस्ट, तो लिस्ट आई एम फाइन, बट लिस्ट भी तो बनाते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, दैट्स नॉट अ थिंग. बट हाँ, आई एम एट द सेम टाइम वो एक मैंने डेवलप किया कि जैसे मस्ट हैव्स आर कूल, बट एक आध चीज जो छूटेगी या कुछ रह जाएगा, दैट इज लाइक इट विल हैपन. मतलब आई एम नॉट सो हार्ड प्रेस्ड, एंड नाउ एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर आई रियलाइज कि मतलब देयर इज नथिंग टू रियली लूज अ कूल ऑन इट. समटाइम्स इट कैन हैपन कि नहीं होगा, जस्ट लाइक दैट. तो मतलब वैसा है, लाइक चीजें करना आई नो जरूरी, क्योंकि वो इट गिव्स यू सेंस ऑफ कंप्लीशन कि आप आए हो एक जगह पे और आप कर रहे हो, और आपके लिए वो जरूरी है, एंड इट गेट्स यू सेंस ऑफ फुलफिलमेंट काफी लोग के लिए. बट आई एम ऑल्सो अप्रिशिएटिव अभी कि मतलब आप पूरा एकदम like not feeling like a holiday, and you're just like over going in overdrive mode and just trying to finish off places of that list, then that becomes less of a holiday and more like, oh, you're stressing out कि oh ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. मतलब इतना लेवल तक नहीं होना चाहिए. मतलब फिर अदरवाइज तुम अपनी लिस्ट छोटी कर दो और 3-4 जगह जाओ और 2 दिन में करो, और बाद में अगले ट्रिप में अगर प्लान करते हो लाइक इतनी सारी जगह है तो, बट वो छुट्टी कम और वो मतलब वर्क ज्यादा लगे तो फिर वो छुट्टी नहीं फील आती है, वैसा आई फील, तो इतना भी नहीं होना चाहिए. तो उस सेंस में मेरा कहना है बस. But family and friends both have been like enriching experience. It's not like which one is better than the other. It's just that आप जैसे जैसे जिनके साथ जिस माहौल में ट्रैवल करते हो उनके साथ आप वैसे एक्सपीरियंसेस लेते. I still travel with my family. That is a different experience still, and it's still like it has changed also. That also they have also become more like enjoying the vibe wala. They go to places, we try and cover a lot of places, but at the same time they also at sometimes they just chill on the beach and sit with me, just chilling. So that also happens. So they have also like picked up on a few things. So it's like you both everybody grows, I guess, while you travel. आई थिंक हम लोग का सबका आई रियलाइज कि कॉमन पॉइंट है कि अपने फैमिलीज काफी ट्रैवल करते थे. दैट्स व्हाट वी गेट फ्रॉम देम एज वेल. लाइक आई थिंक वो बचपन से ही मशीन लर्निंग जैसे अपने माइंड में फीड होते जाता है कि वी नीड टू ट्रैवल लॉट एज वेल. तो आई थिंक बचपन में तो आई थिंक सब लोग ही अपने पेरेंट्स के साथ ये करते थे. लकीली मेरे पेरेंट्स टेंपल पे इतना ये नहीं करते थे. इफ देयर इज अ टेंपल जहाँ पे हम लोग जाते हैं तो वी यूज्ड टू विजिट दैट, बट नॉट स्पेसिफिकली फॉर टेंपल्स. तो आई थिंक बचपन में फैमिली के साथ तो बहुत ट्रैवल किया, एंड देन स्लोली college time पे transition to with like friends, and then we went to Andaman and like पूरे friends वाले trip. And now it's much less with parents. Like parents पे एक trip तो करते हैं जब भी इंडिया जाता है, but like it's more with friends. I think with life के phases के level से it always changes. Now there's you get married and then you have your partner, and then you start traveling with your partner, and then you need to consider कि तुम्हारे partner के क्या values है, उसको क्या चाहिए traveling में. Does she want a luxurious experience? Does she want a more resorty experience or more like a city experience? In that case, you don't go to the mountain. You want more beach experience. You want more resorty experience, and those changes a lot when you need to consider all of those compromises, and like you need to give away some of your freedom and like reduce the driving if she doesn't like the driving, and like focus into like the more luxurious part of it and so on. And I think the next phase is I think is what Shreyas is on. So I think once you have kids, you have to consider कि बच्चा कहाँ पे properly रहेगा, and then you need to consider कि कहाँ पे you will have all the amenities and all the services that are needed, and सब सामान कैसे लेके जाना है. I think Shreyas will talk a lot more about it कि next phase कैसे रहने वाला है हम सबका. मेरा बच्चा So पहले तो before साइलेंट पे गया है, so before I talk I'll let Kirti talk. हाँ, so वही बोल रहा था मैं कि श्रेयस से पहले मैं अपना बता देता हूँ थोड़ा. But yeah, I mean, I think what I would say is as far as people around you go, उसमें मेरा point of view बहुत ज़्यादा change नहीं होता when it comes to people you travel with versus people you meet during travel. तुम किसी के भी साथ travel करते हो, experience अलग रहता है, and you get something different out of it.
सो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, सो इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम कंपेयर टू दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हो, कंपेयर टू योर पार्टनर, कंपेयर टू सोलो, एनीथिंग, राइट? सो आई थिंक पेरेंट्स के साथ जब मैं ट्रैवल करता था तो मेरे केस में भी वही था कि रिलीजियस प्लेसेस का एक रहा है थोड़ा। My parents weren't like super heavy on it, but मैं खुद से तो नहीं जाने वाला, तो जो भी गया हूँ उनके साथ ही गया हूँ, वैसा था। So even though I didn't like enjoy it because भीड़ रहती है and you know all those kinds of things, but still I mean it was a learning experience. Like अभी मैं जब उन चीजों पे देखता हूँ तो I can find things that sort of helped me or that you know made me a better person उस हिसाब से। तो भाई some trips are fun, some trips are basically ha fun, and some trips are fun जब तुम ऐसे 5-10 साल बाद उनको याद करते हो। वो टाइम पे वो शायद फन ना लगे, बट आफ्टर यू गेट नॉस्टैल्जिक यू काइंड ऑफ फील फॉर इट। ओके, सो भाई मतलब नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक हियर, बट भाई अगर कोई ट्रिप बहुत ज्यादा पसंद नहीं भी आ रही हो, so sometimes even with your friends your wavelength may not match, कभी कभी हो सकता, but still that's an experience. So I mean, instead of just having the same 2 or 3 people or just having your same partner और बस तुम 2 या 3 लोग ही हर जगह जा रहे हो, instead of you know mixing it up is good कि मतलब कभी फैमिली के साथ, कभी अकेले, कभी दोस्तों के साथ, sometimes maybe with your significant other. So I think I look forward to all of them. ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि मतलब फैमिली के साथ घूम रहा हूँ तो फिर अरे यार अभी पेरेंट्स के हिसाब से सब करना पड़ेगा। I have never felt that way personally. सही है। आई थिंक हाँ, जो गिरने ने भी बोला और पहले टॉपिक बोला था, आई थिंक हम भी चेंज होते हैं विद टाइम। सो आई फील ट्रैवल इज समथिंग लाइक योर पर्सनैलिटी। तो एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन लाइफ तुम्हारे डिफरेंट पर्सनैलिटी रहते हैं। तो मतलब जैसे आई वाज वन ऑफ दोस जो गिरने ने बोला कि अगर मैं ट्रैवल करता था तो मेरे एक हफ्ते बाद एक फोटो एल्बम आता था, विच इज प्रॉब्ली नॉट रिलेवेंट टू एवरीवन एल्स। बट नाउ मुझे अभी देखना है कि जैसे वल्लभ का भी पॉइंट आई एग्री विद हिम, ऑल्सो मैंने इन अपोज किया कि वो रहते दे आर फॉर पोस्टरिटी। एंड जो आई थिंक एप्पल एंड गूगल आल्सो डू इट नाउ, राइट? कि दिस डे 2 years बैक, 3 years बैक, तो इट टेक्स यू आउट ऑफ टाइम। एंड लोग कहते हैं कि टाइम ट्रैवल नहीं इन्वेंट किया, बट आई थिंक दिस इज अ टाइम ट्रैवल, राइट? यू कैन नॉट, you do go back. I think songs, food or smell, and photos take you back to what a person you were at that point of time. And that's why I think whether to post it on social media or not, that is your call. But you should record it because again, I love human psychology. Human memory is very biased. मतलब, as we grow older, the amount of people who contradict with our story of ourselves reduces. So जितना डॉक्यूमेंट कर सकते हो करो, जर्नल करो। what you feel about this call today and what you will say about this call 10 years later will be very different. क्योंकि हो सकता है we might not like वल्लभ, तो हम उसको एकदम डिस करना शुरू कर देंगे। बट मतलब हो शेयर इज सेइंग नो, बट हाँ तो एनीथिंग लाइक, सो बेसिकली Who पॉइंट likes इज Vallabh? जो we might start liking वल्लभ, तो हम नॉस्टैल्जिक होंगे कि हाँ एक बंदा था कॉल पे आके 40 मिनट के कॉल पे खुद ही 5 मिनट बात करता था। सो लेट्स सी। पीछे तो ग्रीन स्क्रीन लगा के। हाँ, बट यार जोक्स अपार्ट, आई थिंक सो दैट वाज माय पॉइंट कि बेसिकली जब मैं छोटा था आई यूज्ड टू हेट ट्रैवलिंग विद पेरेंट्स कि यार ये कौन डिसाइड करने वाले, ये कौन बताएंगे क्या खाना है, कहाँ जाना है। तो फॉर मी आई थिंक जैसे वल्लभ का है डेस्टिनेशन हो गया, अपोज हिम फॉर द सेक ऑफ इट। मेरा है प्रोसेस और लोग। तो मोर देन ट्रैवल इट मैटर्स किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो। एंड मेरा मेरा कोर इज आई वांट टू ट्रैवल, नॉट आई वांट टू गो हियर एंड डू दिस थिंग्स। क्योंकि जो पॉइंट वल्लभ ने बोला ना कि गोकर्णा में वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, यार तो गोकर्णा शायद वापस आ जाएगा, बट तो इन लोगों के साथ वापस आएगा क्या पता नहीं है एट व्हेन यू आर 20 और व्हेन यू आर 24। तो लाइफ में आई थिंक द ओनली लिमिटेड थिंग इज टाइम। सो एंड ट्रैवल एज आई थिंक वन अगेन एग्जांपल ऑफ रिलेटिविटी। For me, 2014, though men in New York are greater than the next 2 years working in the company. So time stretch होता है when you are traveling because you are more conscious of it. You मतलब जो मैंने पहले बोला था कि you want to make the most of time. So I think that is an attitude which travel brings in you. And secondly, with whom you travel. तो जैसे friends के साथ
हमारा तब था कॉलेज का कि हर 6 महीने में ट्रैवल करेंगे। हमको लगा है तो चलेगा ही करके 3 ट्रिप्स हुए, ठीक है, 3 ट्रिप्स हुए, उसमें भी लोग सब सेम नहीं आए। तो वी फील एवरीथिंग कि हाँ ये तो चलते रहेगा, बट इट इज वेरी फ्लीटिंग। एंड आफ्टर कॉलेज तो एटलीस्ट विद फ्रेंड्स इट्स डिफिकल्ट। लाइक पहले हम मिलते थे, फिर बोलते थे चलो प्लान बनाते हैं, अभी मिलने के लिए प्लान बनाना पड़ता है, अभी पोल डालना पड़ता है कि कौन सा कब फ्री हो, एंड देन ऑल्सो पीपल कैन कम फॉर 3 hours। तो दैट्स दिस इनिशिएटिव तो मेरा था, जो एक वो इसका बुक है बेसिकली, लास्ट लेक्चर। तो उसमें एक हेड फेक रहता है, तो उसका वो दैट एंटायर लेक्चर वाज फॉर दिस किड। तो दिस एंटायर थिंग इज फॉर फ्रेंड्स, कि इसी बहाने एटलीस्ट वी गेट अ कमिटमेंट एंड वी गेट टू टॉक, राइट। तो दिस इज माय थिंग राइट नाउ इन माय 30s, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम लेट्स से व्हेन वी आर टीनेजर्स, राइट, अपना circle needs to I think I've told this to Shambhu before कि अपना center needs to start moving out of ourselves। मतलब in our teens we really care about हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं, मतलब मम्मी को आके बोलते हैं आज इसने मेरे को ये बोला वो बोला। So when we are in our teens, discussions is what people are saying about us, and 20s में आके पता चलता है हाँ ये लोग बस बोलते थे बट दे वर नॉट रियली थिंकिंग अबाउट अस ऑल द टाइम। एंड 30s में रियलाइज कि कोई अपने बारे में सोच ही नहीं रहा था, लाइक दे वर जस्ट डूइंग देयर थिंग, एंड हम इतना फोकस कर देते हैं। सो ट्रैवल इज थिंग वेरी सिमिलर कि वी फील अच्छा ये ट्रैवल सही है वो ट्रैवल सही है, बट इट डजंट मैटर, लाइक इट्स वेरी पर्सनल टू यू हु यू आर एज अ पर्सन। एंड if you can identify that and if you enjoy traveling, that means you know who you are as a person. So I take that as a benchmark. And then it's anything. It's like what Shell also said. Some people compromise. Some people are compromises or people who ensure that others are happy. Some people are influencers. I will be happy, and if you are happy, then come. So again, it's like the type of personality comes out. So, and जो last point गिनने वाला कि traveling is family वाला, my father liked to travel a lot, and I used to feel कि यार ठीक है ना, मतलब क्यों ट्रैवल करना है, कि एक छुट्टी एक हफ्ता मिला है तो लेट्स स्टे एट होम, मतलब क्यों छुट्टियों पे कहीं जाना है, क्योंकि इट वाज ट्रैवल में आई नेवर कंसीडर्ड लेट्स से द जर्नी एज अ ट्रैवल, कि ट्रेन में बैठे ये क्या ट्रैवल है, मतलब ये तो इससे अच्छा घर पे वीडियो गेम खेला रहता, या फिर यहाँ पहुंच गए अब होटल मिस होने जा रही है क्या ट्रैवल, मतलब आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि हाँ ये स्पॉट्स आर द थिंग। एंड माय ब्रदर इज लाइक वल्लभ, सो ही लाइक्स अगर यूरोप जा रहे हैं तो 2 हफ्ते में ये 14 सिटीज करने हैं। मैं बोला 2 ही हफ्ते है, मतलब 14 सिटीज करने, तो इट्स वेरी पॉइंट टू पॉइंट, राइट। तो आई नेवर यूज्ड टू लाइक दैट बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ चेकलिस्ट वाला ट्रैवल कि ओके यू, एंड इट्स आल्सो मोर ऑफ अ सोशल मीडिया ट्रैवल कि चेक द हियर, चेक द देयर, चेक द देयर, फिर बाद में शेयरिंग योर पिन कि मैं यहाँ ट्रैवल किया हो करके। So that has changed a lot personally. And what I now realize is, as a parent, again next phase पे शायद होगा, but वो मैं शेयर कर दूँ, मेरा बच्चा पहला ट्रिप थाईलैंड गया है, क्योंकि मेरे दोस्त की शादी थी। So it was not because मेरे को थाईलैंड जाना था, it was because मेरे दोस्त की शादी थी। And it is a very monumental task to convince parents कि 6 महीने के बच्चे को ट्रैवल करने दो करके। So that happens, and उसमें फिर मेरा वल्लभ जैसा है कि नहीं हो रहा है, यू फिगर आउट कि अब तुम इससे कैसे एडजस्ट करोगे। तो उसमें मतलब मैं आई डोंट शो इट, बट कुछ मेरा भी फिक्स है कि ये हो रहा है तो हो रहा है, देन नो नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो उसमें सेम था। एंड नाउ व्हाट आई रियलाइज कि मेरे पापा को क्या लगता था कि ट्रैवलिंग वाज द ओनली टाइम व्हेन माय फादर यूज्ड टू स्पेंड 24 आवर्स ऑफ द डे विद मी, क्योंकि अदरवाइज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट males are supposed to earn and it's okay females take a break. So it's, you don't realize ki how fleeting time is it ki मैं Monday to Friday I don't hate my job, I love my job, but when I leave my kid is sleeping, when I come back my kid is sleeping, so I see him sleeping most of the time, and now I feel ठीक है यार आज Sunday है, मतलब मेरा काम भी बड़ा होगा, but चलो कहीं जाते हैं क्योंकि when he's awake I can spend that time with him. So there are a lot of ways to happiness. So happiness is a means of travel kahi, and friends are as a means of travel. What I'm now realizing in my 30s finally is family as a means of travel. So मुझे तो thankfully like काफी चीजें सही बोली लोग कि ये सही करता है वो सही करता है, वल्लभ भी इतनी गाड़ी मारता है, वो भी प्राइवेट जेट में काफी तारीफ करता है। बट फर्स्ट टाइम मतलब इसमें जब बाबा बोला तो वो जो फीलिंग है ना, लाइक दैट इज अनबीटेबल। तो आई फील यू शुड आल्सो डू वन पॉडकास्ट ऑन दैट, how family or your idea of companionship brings happiness in your life. So that's all I had to say about this topic. And yeah, thank you everyone. Thanks, guys.